जुमे के दिन आपको ये सुन्नतें करनी चाहिए। जुमे के दिन नहाएं और अपने जिस्म को पाक करें। अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इत्र या खुशबू लगाएं। हो सके तो बालों में तेल लगाएं। अपने नाखून काटें। मिसवाक इस्तेमाल करें। सूरे कहफ पढ़ें और कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। Follow me for more such Islamic videos. வரகாத்துஹு. அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் காலகட்டத்தில் கோடீஸ்வரராகவும் மிகவும் மதிக்கத்தக்க ஒருவராக இருந்தார். அவர்களுக்கு மனைவி, பிள்ளைகள், தோட்டம், துறவு, விலங்குகள் என அனைத்துமே இருந்தது. அல்லாஹ் அவர்களை சோதிக்க நினைத்தான். அவரிடமிருந்து அனைத்தையும் பறித்தான். அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் பிள்ளைகள் அனைவரும் இறந்தார்கள். அவர்களின் தோட்டம், துறவுகள் அனைத்தும் எரிந்து சாம்பலாயின. அவரின் அனைத்து வளங்களும் பறிபோனது. அவர் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டு மிகவும் கஷ்டத்திற்குள்ளானார். மகாராணி போன்று வாழ்ந்த அவரின் மனைவி வறுமையின் காரணமாக தங்கள் நீண்ட முடியை கத்தரித்து விற்கும் நிலை வந்தது. அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அனைத்தையும் பொறுமையோடு எதிர்கொண்டு அல்லாஹ்விடம் துவா செய்தார். அல்லாஹ் அவரின் துவாவை ஏற்று தன் அருளை கொண்டு அவர் இழந்த அனைத்தையும் பன்மடங்காக வழங்கினான். உங்களது கடினமான நேரங்களில் பொறுமையோடும் அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்துவோராகவும் இருங்கள். மனதில் கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ் நாடினால் ஒரு நொடியில் உங்கள் நிலைமையை மாற்ற முடியும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. காதலி மேலேயோ மனைவி மேலேயோ தப்பான சந்தேகம் வருது, என்ன பண்றது? இது நிறைய பேருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை. இது எப்படி கையாளுறது? ஒண்ணு, சந்தேகம் அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்தப்படாத ஒண்ணு. அதுல ரெண்டு இருக்கலாம். ஒண்ணு, அது உண்மையாவும் இருக்கலாம். ரெண்டாவது, அது பொய்யாவும் இருக்கலாம். அது உண்மையோ பொய்யோ அவங்க தப்பு செய்யறாங்கிறது உங்க கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயம். உங்க கட்டுப்பாட்டுல இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்ப உங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அது வெறும் சந்தேகமா மட்டுமே பொய்யா இருக்கிற பட்சத்துல உங்க உறவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. ஆனா அது உண்மையா இருந்துட்டா உங்க ரிலேஷன்ஷிப்பும் குடும்பமும் கெட்டு போகும். அப்போ உங்களுக்கான முடிவு ரெண்டு தான். ஒண்ணு, அவங்க செஞ்ச தப்ப மன்னிச்சு ஏத்துக்கிறது. ரெண்டாவது, அவங்களை விட்டு விலகி வாழ்றது. ஒரு சந்தேகத்தோட எக்ஸ்ட்ரீம் முடிவு இவ்வளவுதான். இங்க சந்தேகம் உறுதியான ஏற்படுற முடிவை விட உறுதிப்படுத்தப்படாத சந்தேகத்தினால அன்றாடம் நடக்கிற சண்டை நிம்மதியற்ற வாழ்க்கையை கொடுக்குது. அதனால சந்தேகப்படாம சந்தோஷமா வாழுங்க. தப்பு செய்யணும்னு மனசுல நினைக்கிறவங்க நீங்க என்ன செஞ்சாலும் தப்பு செஞ்சே தீருவாங்க. அது ஆணோ பெண்ணோ யாரா இருந்தாலும். அதனால நீங்க சந்தேகப்படுறது வேஸ்ட். அப்படி உண்மையாவே தப்பு நடக்குதுன்னா அது ஒரு கட்டத்துல வெளியில வந்து அதுக்கான முடிவை நீங்க எடுப்பீங்க. அது அப்போவோட அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். ஆனா நீங்க சந்தேகத்தோட வாழ்றதுங்கிறது உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையை ரெண்டு பேருக்கும் நரகமாக்கிரும். அதனால சந்தேகம் இல்லாத உண்மையான அன்பு செலுத்துங்க. உங்க காதல் உங்களை விட்டு போகாது. ஏன்னா விதைக்கிறது தான் முளைக்கும், நீங்க நினைக்கிறது தான் நடக்கும். पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है हिंगलाज शक्तिपीठ या कोट्टारी देवी शक्तिपीठ, जहां माता सती का सर गिरा था। पीठ की शक्ति है कोट्टारी माँ और भैरव है भीमलोचन। इस पीठ की मुसलमानों के बीच भी मान्यता है, जो इसे नानी पीर बुलाते हैं। हिंगलाज माता की मूर्ति हिंगुलू या कुमकुम से ढके होने के कारण उन्हें हिंगलाज कहा जाता है। एक कथा के अनुसार यहीं पर माँ शक्ति ने हिंगोल राक्षस का वध किया था। भगवान परशुराम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्षत्रियों को मार रहे थे। मारते मारते जब वो हिंगलाज माता के भक्त जयसेन तक पहुंचे, तब माता ने दर्शन देकर परशुराम जी को इन हत्याओं को रोकने के लिए कहा था, क्योंकि तब तक वो सारे अधर्मी क्षत्रियों को मार चुके थे। यही कारण है कि आज भी भारत के कई क्षत्रिय कुल इन्हें अपना कुल देवी मानते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में यकसा मकबूल है और इसने दुनिया भर से लाखों लोगों को मुतासिर किया है। पुन्नू का असल नाम मीर दोस्तैन होत था, जो कि मीर अली जान का बेटा था। होत खानदान अपनी हुक्मरानी की वजह से मशहूर था। सस्सी राजा दिल्लो राय की बेटी थी, जो कि सिंध में भंबोर के इलाके का हुक्मरान था। उसकी पैदाइश के वक्त एक नजूमी ने पेशगोई की थी कि ये एक मुसलमान लड़के से शादी करेगी। इस खदशे के पेश नजर राजा ने अपनी बेटी को संदूक में डालकर दरियाए सिंध में छोड़ दिया। ये संदूक फिर धोबी को मिला, जिसकी खुद कोई औलाद न थी। उसने इसको खुदा का इनाम समझकर अपने पास रख लिया। सस्सी छोटी उम्र से ही अपने बाप की मदद करती थी। जब पुन्नू ने सस्सी की खूबसूरती का चर्चा सुना तो उसको देखने की ख्वाहिश हुई। पुन्नू उसके गांव पहुंचा तो पहले धोबी ने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुन्नू ने धोबी को कपड़े धोकर दिखाए तो उसने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ये खबर पुन्नू के बाप के पास पहुंची तो उसने ये फैसला कबूल करने से इनकार कर दिया। पुन्नू के भाई वहां पहुंचे और धोखे से इसको साथ ले गए। ससी को ये मालूम हुआ तो वो इसके पीछे गई। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चरवाहे से हुई, जिससे उसने पुन्नू का पूछा। चरवाहे ने जब बदनीयती का इजहार किया तो ससी ने दुआ मांगी कि जमीन फट जाए और मैं चरवाहे से बच जाऊं। तो जमीन फट गई और वो इसमें दफन हो गई। पुन्नू को होश आने पर मालूम हुआ कि वो अपने इलाके में है, तो वो भंबोर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी चरवाहे से हुई। उसको हकीकत मालूम हुई तो उसने वही दुआ की और वो भी जमीन में समा गया। ससी पुन्नू कहानी का ट्रेजिक एंड ही मीरी
हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. And I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion.
It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing help, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. I did pray for arms and legs, but arms and legs did not come. Because of fear, I concluded, God's not real. There is no hope. I'm alone. I'll always be alone. I'll never get married. Even if I got married, I can't even hold my wife's hand. Even if I had kids, I can't even hold my children when they're crying. I am sorry if you've been abused. I'm sorry if someone has mistreated you. I'm sorry if you're struggling with something that I don't know about.
But I want you to know something, that you don't know what miracles can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance.